अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DFTPro टूल के जरिए Xiaomi Redmi A3 का IMEI रिपेयर करने का पूरा तरीका देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले DFTPro ओपन करके Xiaomi टैब में जाएं और Redmi A3 मॉडल सिलेक्ट करें। अपना IMEI एंटर करने के बाद स्टार्ट दबाएं और मोबाइल को ऑफ करके PC से कनेक्ट कर दें। टूल अपना काम शुरू कर देगा। दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखें, कभी कभी रिपेयर प्रोसेस के बाद मोबाइल ऑन होते वक्त स्क्रीन पर नो कमांड लिखा हुआ आ जाता है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोबाइल नो कमांड पर रुक जाए तो बस आपने उसे हार्ड रीसेट करना है। पावर और वॉल्यूम अप बटन का इस्तेमाल करके वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट कर दें और आपका मोबाइल नॉर्मल ऑन हो जाएगा और IMEI भी अपडेट हो चुका होगा। उम्मीद है आपका मसला हल हो गया होगा। अगर वीडियो से मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।